them कि जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे 90 तक जा पा रहे, what's your advice as a faculty or a mentor कि इन लोगों ने क्या करना चाहिए? Right. So, सबसे first तो भाई I would congratulate Mohit for Deutsche and That's Venki a चला dream गया. come. Yeah, Thank you, very good Manoj. job. Dude. And Venki just left, but KT Carney is also a very big deal, guys. Yeah, yeah, These two are very big big one, companies, man. and यहाँ पे बहुत competition रहता है. So the fact that these guys actually pushed through the placement week and got in is a very big deal. Also, another thing about Ketan bhai, since both Mohit and Venki mentioned कि वो placement के time पे भी help करे, मेरा job चल रहा है. अभी भी मेरे calls जाते हैं केतन भाई को. So नहीं छोड़ते केतन भाई. So that's great. That's very helpful. Very great, like an important presence right now, honestly, in my professional career and personally It too. means a lot, Manohar. Thanks, man. Yeah. And now let's get to this. Honestly, even what Venki was mentioning, right? कि basic आपने जो छोड़े भी हो वो सारे what do you say, just cover it. So now what I essentially like to do is divide personas based on Hmm. what level of your prep is at. Right. So if you're already at a 90 percentile, आपका already prep अच्छा चल रहा है, accuracy अच्छा चल रहा है, scores भी आगे जा रहे हैं, then that is something that you need to do. PNC आपने छोड़ रखा है तो आप उसका basics भी cover कर लो. But even that is not happening and your scores are low, then what ideally I need to tell you is tomorrow ही बैठ जाओ या day after ही बैठ जाओ, sit on the set of mocks that you have already given. Okay, because there is something gravely that you have missed out on. Okay, कि आपका या तो आपने strong point miss out कर रखा है कि you have not identified where you are good at, which topics you are good at, or two, you are not steering clear of topics that you're bad at. So you need to look at those, and a lot of the answers will come from those only, and that's where the increased or emphasized importance of how you do your mock analysis. Mocks देना important नहीं, उसको analyze करना important है. So I'll just suggest it to anyone who's struggling right now and aims to just get to 90 plus percentile or even 95 plus percentile. That's like not at all difficult. Even getting to 99 is not difficult, but 99 के लिए you need to then, it's an accuracy game. Okay, but if you 90 percentile भी पहुंचना है आपका एक decent accuracy पे भी you will be able to get there. The idea then is just to look at those questions on the final day which you are good at, or if you're struggling in RC, then look at the topics or look at the language, the type of language at the RC that you're performing well, or the RCs that you're not performing well, जिसमें objective questions आप उधर भी miss out कर रहे हो, right? That is essentially what is going to help you sail through on the final day, because I keep repeating this, mock same नहीं आने वाला है final day पे. The only thing that you're sitting down with is essentially the set of skills that you have been able to harbor over the varied many mocks that you have given in X and Y like months. So that is what you need to do. 95 percentile आपका जो भी aim होगा right now, that is something that you need to do on a I think भाई priority basis. 95% लाना is not that difficult task. अगर कोई अगला 20-22 दिन भी करे ना बकायदा बाइज्जत, I think 95 पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं. Just round about 27% of the paper, मेरे ख्याल से 73 marks पे आया था last year. That's round about 25 question. 25 question को तुम 3 section में divide करो. बस तुम्हारा accuracy ठीक ठाक होना चाहिए, because lot of institutions are not focusing on the accuracy. I think at C2C we are quite focused on accuracy, level of difficulty, because LOD तुमको काफी help करता है question selection में. You can't pick up every question randomly and start working on it. अगर आपका modern maths ठुका हुआ है, then you can't really work on modern maths on a day. That's going to be a suicide. So if you take care of your level of difficulty, you will end up choosing those questions जो तुमको लगता है तुम्हारी play level पे आ सकता है, तुम्हारे ground पे तुम खेल सकते हो. And for the fact, if you gauge LOD very well, you will pick up questions which are doable. And most of the time, if the question is doable to you, you will end up having 100% accuracy. आपका accuracy कब जाता है खराब? जब आप trial and error करते हो हर एक question में, तब टाइम भी खराब और एक्यूरेसी भी खराब. सो मेरे ख्याल से अगर मैं 25 क्वेश्चन का भी अगर बात करूं, वर्बल में सबसे ज्यादा लगेगा आपको. वर्बल में आप 11 करो, डीएलआर में आप 8 टारगेट करो, क्वांट्स में आप 8 टारगेट करो, यू आर 95 प्लस प्लस. यू आर 95 प्लस प्लस. तो आई थिंक दिस इज स्टिल डुएबल. डीएलआर के बारे में अगर मैं बात करूं, टिपिकल चीजें है भाई, सेट थ्योरी है, गेम्स एंड टोना है, सिलेक्शन है, अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट का ना फ्लोर एंड कैप लेवल है, कुछ भी ऐसा बाहर का नहीं आएगा अरेंजमेंट में. इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा, बट बकेटिंग लगा के आप राउंड अबाउट 6-7 क्वेश्चन भी आराम से निकाल सकते हो. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो मुझे लगता है कि आप 92 95 तो आप अच्छा खासा खेल सकते हो. 92 के ऊपर 93 भी अगर पकड़ेगा ना एकदम बॉटम पे, आई एम त्रिची, रांची, उदयपुर, आई थिंक दीज गाइज विल स्टार्ट गिविंग यू कॉल्स. एंड इफ यू आर रियली गुड विथ योर प्रोफाइल एंड ऑल दैट, आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम.
सो फोकस ऑन दैट. बाय द वे, अगर कुछ आपको ऐड करना हो मोहित, मनोहर, आप एक बार ऐड कर सकते हो. Just wanted to change a bit perspective that 99 percentile अगर बड़ा नंबर लग रहा है तो परसेंटेज टर्म पे आ जाओ. हाँ अराउंड हाँ 50%. राइट 50% राइट, तो आई थिंक सबको अच्छा ही लगता है कि 50% स्कोर करना इज वेरी इजी, राइट? तो फिर दैट इज राइट. थोड़ा बिकॉज कैसे है ना, बच्चों ने कभी 70-80 के ऊपर गए नहीं है बच्चे, तो बच्चों को लगता है भाई 99 तो मैं कैसे लेके आएगा, 2 बार काट देगा तो भी नहीं आएगा. तो बच्चे वही कभी वही. टेंशन में आ जाते हैं. सो इट इज नॉट अ परसेंटेज, इट इज परसेंटेज. यानी मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, देखो 2.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 2,20,000 बच्चे आएंगे, पकड़ के चलो 1-1.25 लाख बच्चे आपका स्कोर आराम से ऊपर करेंगे. बिकॉज यार वो लोग ट्रायल एंड एरर के लिए आते हैं, वो बेचारे टेस्टिंग के लिए आते हैं कि कैसा है पेपर. एंड इफ दे स्क्रू अप एंड इफ यू डू वेरी वेल, इट्स अ परसेंटाइल कंपैरिजन. So even if you're not at your best, but you look that really good because compared to those 1-1.25 लाख बच्चा, आपने बहुत अच्छा करा, तो आपका स्कोर वहां पे शूट अप हो जाता है. तो ये कैट की ब्यूटी है मेरे ख्याल से. तो गेम में बने रहना काफी जरूरी है.